हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल नाज अकेडमी एजुकेशन। होप आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 12th क्लास का चैप्टर नंबर 5, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ का एक्सरसाइज। ठीक है, तो हमारे प्यारे से बायोलॉजी का ये चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, चलिए इसके एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एक्सरसाइज में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला है, हु प्रपोज दैट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, होपेरन एंड हैलोडेन। उसके बाद दूसरा है, द सीक्वेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ मे बी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स कॉलिडियल एजरेट्स एंड यूबेंट से। ओके। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, इन हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल इज प्रेजेंटेड बाय। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है, क्यू स्क्वायर, ये आएगा। ओके। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है आपको एमसीक्यू का, सिलेक्ट द एनालॉगस ऑर्गन्स। तो इसका ऑप्शन नंबर है आपका 2, फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन्स एंड पेंगुइन। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, आर्चियोपेट्रिक्स इज नोन एज मिसिंग लिंक बिकॉज इट इज़ अ फॉसिल्स एंड शेयर कैरेक्टर ऑफ बोथ। तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। सिक्स क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एवोल्यूशन। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है, म्यूटेशन एंड नॉन रैंडम एंड डायरेक्शनल, ये राइट है। ओके। उसके बाद सेवन क्वेश्चन है, जीन फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट ड्यू टू। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है, रैंडम मैटिंग, ये राइट है। आठवां है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट शोन बाय द एप। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 2, ये राइट है, टेल इज प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 9 है, ब्लैंक कैन बी कंसिडर्ड एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एप एंड मेन। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट है आपका। 10 क्वेश्चन है, द क्रैनियल कैपेसिटी ऑफ नीदरथल मैन वॉज। तो ऑप्शन नंबर आपका जो 3 है, ये 14,000 सीसी। ओके, ये राइट है आपका। सॉरी, ये 100 है, हाँ, क्या 1000 नहीं, 1400 सीसी। ओके, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो 1400 सीसी। ठीक है, मैं डायरेक्टली बोलती हूँ 1400 सीसी। ओके, अब हम आते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ही है। पहला दिया गया यहाँ पर, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। पहला है जीन पूल। जीन पूल का आंसर लिखेंगे, द टोटल जेनेटिक इंफॉर्मेशन इनकोडेड इन द सम टोटल ऑफ जीन्स इन मेंडेलियन पॉपुलेशन इज कॉल्ड जीन पूल। ओके, ये आपका आंसर हो गया जीन पूल का। सेकेंड है जीन फ्रीक्वेंसी। जीन फ्रीक्वेंसी का लिखेंगे, द प्रोपोर्शन ऑफ एन अलील इज इन द जीन पूल टू टोटल नंबर ऑफ अलील्स एट द गिवन लॉकिस इज कॉल्ड जीन फ्रीक्वेंसी। ये हो गया आपका आंसर। उसके बाद सी दिया गया आपको, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। तो आंसर लिखेंगे सी का, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज स्लो, ग्रेजुअल, कंटिन्यूअस एंड irreversible change through which the present day complex forms of the life developed or evolved for their simple pre-existing forms. Okay, D है population। population का definition लिखेंगे, according to this theory all individuals of the same species constitute a population। E है speciation। स्पेसिएशन का डेफिनेशन लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज इज कॉल्ड स्पेसिएशन। ओके, तो पहले के जितने भी हमें डेफिनेशन बोला गया था, सारे डेफिनेशन हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्टिव रेडिएशन का लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन विच रिजल्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओरिजिनल स्पीसीज टू मैनी डिफरेंट वेराइटीज इज एडेप्टिव रेडिएशन। थर्ड क्वेश्चन है,
If the variation occur in the population by chance alone and not by natural selection and bring change in frequencies of an alleles, what is it called? थर्ड का आंसर लिखेंगे, इफ द वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन अकर्स बाय चांस अलोन एंड नॉट बाय नेचुरल सिलेक्शन एंड brings about a change in frequency of an allele, it is called genetic drift. Okay. फोर्थ क्वेश्चन है, स्टेट द हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम. The Hardy-Weinberg equilibrium law states that at the equilibrium point, both the gene allele frequency and genotypic frequency remains constant from generation to generation. Fifth question है, what are homologous organs? फिफ्थ का आंसर लिखेंगे, homologous organs are those organs which are structurally similar but perform different function. सिक्स्थ क्वेश्चन है, what is vestigial organs? आंसर लिखेंगे सिक्स्थ का, vestigial organs or rudimentary organs are imperfectly developed and non-functional, degenerate structures that were functional in some related and other animals or in ancestors. सेवन क्वेश्चन है, सेवेंथ वाला हमारा, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मॉडर्न मैन? सेवेंथ का आंसर लिखेंगे, द साइंटिफिक नेम ऑफ मॉडर्न मैन इज होमो स्पाइंस. इसके बाद आठवां क्वेश्चन है, व्हाट इज कोकरवेट? आंसर लिखेंगे, कोकरवेट्स आर कॉलोइडल aberrations of hydrophobic proteins and lipids. नौवां क्वेश्चन है हमारा, विच पीरियड इज नोन एज एज ऑफ रेप्टिलिया? तो आंसर लिखेंगे नौवे का, जुरासिक पीरियड इज नोन एज एज ऑफ रेप्टिलिया. 10वां क्वेश्चन है, नेम द एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन विच इज डिस्क्राइब्ड एज मैन विथ एप ब्रेन. आंसर लिखेंगे 10th का, ऑस्ट्रेलोपिथेकस इज द एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन विच इज डिस्क्राइब्ड एज मैन विथ एन एप ब्रेन. ठीक है, कितना हार्ड वर्ड है ये. ठीक है, तो ये हमारे जितने भी थे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर हो गए यहाँ पर एंड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ख़त्म हो चुका है. तो क्वेश्चन नंबर 3 है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. फर्स्ट है, कुछ भी निकल रहा है. राइट अ नोट ऑन जेनेटिक ड्रिफ्ट. 7 पॉइंट्स है इसके. ठीक है, तो पहला पॉइंट है, एनी अल्टरनेशन इज allele frequency in the natural population by chance is called genetic drift. Example, elimination of a particular allele from a population due to events like accidental death prior to mating of an organism. The concept of genetic drift was first given Swell-Wright and is hence also called as Swell-Wright effect. The Swell-Wright effect. Third है, genetic drift are random or directionless. The effect of genetic drift is more significant in small population than in large population. Due to genetic drift, some alleles of a population are lost or reduced by chance and some other may be increased. Sometimes a few individuals become isolated from the large population and they produce a new population in a new geographical areas. The allele frequency of the new population become different. The original drifted population becomes founders and the effect is called the founder effect. 7th है हमारा, a bottling effect is seen when much of a population is killed due to a natural disaster and only a few remaining individuals are left to being a new population. So ये हमारा आंसर है. आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालाइज द डिफरेंट फैक्टर्स दैट are responsible for changing gene frequency. The 4 major factors that are responsible for changing gene frequency are as follows. First, gene follow migration. Gene follow is the movement of gene into or out of a population. Gene movement may be in the form of migration of organism or gamete or segments of DNA. Thus, gene follow alters gene frequency causing evolutionary changes. Second point है genetic drift. Any random fluctuation in allele
frequency occurring in the natural population by pure chance is called genetic drift. For example, when the size of a population is severely reduced due to the natural disaster like earthquake, floods, fires, etc. Versus the eliminating of particular elites from a population, smaller populations have greater chance for genetic drift. Thus, genetic drift will result in the change in gene frequency and has the potential to bring about evolutionary change. थर्ड पॉइंट लिखेंगे, मतलब ये थर्ड फैक्टर है नेचुरल सिलेक्शन. नेचुरल सिलेक्शन इज द प्रोसेस by which better adapted organism grow and produce more offspring in the population. It bring about evolutionary change by favoring differential production of gene that bring about change in gene frequency from one generation to the next generation. Fourth factor है mutation. Sudden permanent heritable change are called mutation. Mutation can occur in the gene, in the chromosome and in the chromosome member. Mutation that occurs within the single gene is called point mutation of gene mutation, or in a large segment of genes by chromosomal aberration. Both point mutation and chromosomal aberration and alter gene frequency. Mutation lead to the change in the phenotypic of the organism causing variation. Third question है, draw a graph to show that natural selection lead to disruptive change. थर्ड का ये आंसर है, बस आपको ये ग्राफ बता देना है, ठीक है. नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, टाइम, और फिर बताना है कि ये किस तरह टाइम के साथ साथ ये कैसे इसका मतलब ज़्यादा हुआ, किस तरह कम हुआ. जो इधर वाला दिख रहा है ये पॉपुलेशन ऑफ आफ्टर सिलेक्शन है, और नीचे वाला जो वो है ओरिजिनल सॉल्यूशन. यानी ये देखो, ये जो बीच से गया हुआ है ना, ये हो गया हमारा सिलेक्शन अगेंस्ट द इंटरमीडिएट्स. ओके. और ये जो थर्ड वाला है ना, जो यहाँ पे जो दिख रहा है, ये हो गया ओरिजिनल पॉपुलेशन हमारा. और ये तो फर्स्ट वाला जो जैसा ओरिजिनल है वैसा ही है, ठीक है. तो इधर टाइम फ्लो करेंगे और इधर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स. ओके. हाँ, आई नो स्क्रीन बोर्ड गंदा हो गया है, बट कोई बात नहीं, मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, आप लोग लिख लीजिए. ओके. स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ, ये द सिग्निफिकेंस ऑफ फॉसिल्स. तो आंसर लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट डालेंगे, फॉसिल्स आर द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव्ड in a past in various geological layers. The study of fossils provide the most convincing and direct evidence of evolution. The study of fossils tell us that life forms were not same millions of years ago. Short form MYA लिखते हैं, millions of year. Okay. Fourth है, the geological time scale is based on the fossil record. From the fossil record we can trace the complete evolutionary history of animals. The study of fossils is an important aspect of evolution since it can be used in planology and anthropology for determining age of the fossils and deducing information about their ancestors. Next question है फिफ्थ है, write the objections to mutation theory of Hugo de Various. आंसर लिखेंगे, objection to mutation theory are as follows. The large and discontinuous variation observed by Hugo de Various were actually due to chromosomal aberrations. Gene mutation usually bring about only minor changes. Rate of mutation is very slow as compared to requirement of evolution. Chromosomal aberrations have little significance in evolution as they are quite unstable. Sixth question है, what is डिस्ट्रिप्टिव सिलेक्शन, गिव एग्जाम्पल. आंसर लिखेंगे, डिस्ट्रिप्टिव नेचुरल सिलेक्शन इज अ सिलेक्शन इन विच more number of individuals acquire peripheral character value at both ends of the distribution curve. In this selection, nature selects extreme phenotype and eliminates intermediates. This results in the formation of two peaks in the distribution of traits. This kind of selection is rare. It ensures the effect of the entire gene pool of a population considering all mating types or system. Example, a distributive selection was observed in the different beak size of African seed cracker finches. The birds have different size of the beak and they feed on seeds
The available seeds were of two kinds, is that small and large sized seeds. Large beak sized birds feed on large seed while small beak sized birds feed on small seeds, and their number was increased. Intermediate big sized birds were unable to feed on either type of seed, so their population decreased gradually and then were eliminated by natural selection. ओके तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सब खत्म हो गया। ठीक है, मतलब सारे आंसर हमने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग। चलिए मैच द फॉलोइंग का आंसर देखते हैं। ओके तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो मैच द फॉलोइंग है उसका आंसर यहाँ है। पहला हमें दिया गया है यहाँ पर ऑगस्ट वाइसमैन, तो इसका आंसर लिखेंगे जर्म प्लाज्म थ्योरी। दूसरा है ह्यूगो डिवेरिस, तो जो है म्यूटेशन थ्योरी। और थर्ड है चार्ल्स डार्विन, तो चार्ल्स डार्विन का लिखेंगे थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जो कि ऑप्शन डी दिया था। और फोर्थ है हमारा लेमार्क का लिखेंगे थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ओके तो मैं स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ, आप लोग स्क्रीन शॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। ओके चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। फर्स्ट है वुड यू कंसीडर विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बैट एज होमोलोगस और एनालॉगस एंड वाई। फर्स्ट का आंसर लिखेंगे द विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बैट आर एनालॉगस बट नॉट होमोलोगस, यानी होमोलोगस नहीं है, एनालॉगस है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगस स्ट्रक्चर आर एज फॉलो। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, इंसेक्ट्स एंड ऑफ बर्ड लुक सुपर physically alike but they are not anatomically similar structure though they perform similar function। है तो अलग अलग लेकिन सिमिलर फंक्शन काम करते हैं, राइट। उसके बाद है मतलब फ्लाई करने का ही हेल्प होता है ना, बैट का भी जो विंग्स है वो फ्लाई में हेल्प करती है और उसका भी बटरफ्लाई का भी सेम। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे आई ऑफ द ऑक्टोपस, मोलिस्का एंड ऑफ मैमल्स दे डिफर इन देयर retinal position, the structure of lens and the origin of different eyes parts। थर्ड पॉइंट लिखेंगे द फ्लिपर ऑफ द पेंगुइन, जो कि बर्ड्स है, एंड डॉल्फिन्स मैमल्स है, अलग अलग है। ओके उसके बाद है फोर्थ पॉइंट है स्वीट पोटैटो रूट मॉडिफिकेशन एंड पोटैटो स्टेम मॉडिफिकेशन स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ओके तो ये हमारा आंसर हो गया। हमने एग्जाम्पल के साथ बता भी दिया, प्रूफ के साथ कि ऐसा क्यों है। ओके स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा आता है यहाँ पर सेकेंड, व्हाट इज एडेप्टिव रेडिएशन, एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जाम्पल। आंसर लिखेंगे सेकेंड का द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन विच रिजल्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओरिजिनल स्पीसीज टू मैनी डिफरेंट वेराइटीज इज कॉल्ड एडेप्टिव रेडिएशन। डार्विन्स finches is one of the best example of adaptive radiation. During his visit to Galapagos Island, Charles Darwin also noticed a variety of small birds. These birds are now called Darwin finches. Darwin concluded that the American mainland species of the bird was the original of one from which they migrate to the different island of Galapagos. These birds adapted to their different environmental condition of these island from original seed-eating feature. Many other forms which altered beaks evolved into insectivorous features. थर्ड पॉइंट लिखेंगे अनदर एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन इज ऑस्ट्रेलियन मार्supials। इन ऑस्ट्रेलिया there are many marsupial mammals who evolved from a common ancestor। ओके सी यहाँ पे जो माइग्रेट करना का क्या मतलब है, जैसे कोई बर्ड है गर्मी के दिनों में वो वहाँ रह रही है, लेकिन उसके बाद उसका कंडीशन है ना धीरे धीरे चेंज होता है। किसी भी जगह कंडीशन हमेशा एक जैसा तो नहीं रहता है ना, चेंज होता है। तो मान लीजिए कि जो ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया में कोई बर्ड है वो गर्मी में रह रही है, लेकिन वहाँ है ना जब विंटर का मौसम आएगा तो वहाँ उसका एनवायरमेंटल उसको सूट नहीं होगा, तो माइग्रेट करके दूसरी जगह चले जाएगा। ठीक है, उसको माइग्रेशन बर्ड्स बोलते हैं ऐसे को। ठीक है, एग्जाम्पल लिया था ऑस्ट्रेलिया का। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है बाय टॉकिंग इंडस्ट्रियल मैकेनिज्म एज वन एग्जाम्पल इन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल सेलेक्शन। आंसर लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, natural selection encourages those gene of traits that assure
the highest degree of adaptive efficiency between the population and its environment. Industrial melanism is one of the best examples of natural selection. In Great Britain, before industrialization, 1845, grey-white winged moths were more in number than black-winged moths. These moths are nocturnal and during the daytime they rest on a tree trunk. White-winged moths were camouflaged well with the lichen covered trees that helped them escape from the predatory birds. However, the black-winged moth resting on the lichen-covered tree trunks were easy victims for the predatory birds and their number was reduced. During the Industrial Revolution, large number of industries came up in Great Britain. The industries released black sooty smoke that covered and killed the leeches growing on a tree and turned the tree black due to pollution. This change became an advantage to black-winged moth that camouflaged well with the black tree trunks and their number increased. 10 point लिखेंगे. The white-winged moth, however, become victim to predatory birds due to which their number reduced. Thus, natural selection has resulted in the establishment of a phenotypic traits in the changing environmental conditions. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. डिस्क्राइब द ओरियन मिलर एक्सपेरिमेंट. सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, ये आपको डायग्राम दिया गया, आपकी बुक में भी दिया गया, तो एक्सप्लेन भी किया गया वहाँ पर, बट कोई नहीं, आप पहले ये डायग्राम अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है. वो मार्क्स के हिसाब पे डिपेंड होता है कि आपको अपने पॉइंट ही इतना लिख देना है कि हो जाएगा, ठीक है. यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि स्टैनली एल मिलर and his teacher Harold C. Urey provided the first experimental evidence in support of chemical evolution theory of Orion. फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे apparatus and procedure. अब उसका apparatus क्या क्या था, उस एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया गया था और प्रोसीजर कैसा था, ठीक है. They designed a glass apparatus called a spark discharge apparatus. The apparatus was first sterilized and evacuated. Methane, ammonia and hydrogen gases were pumped in the proportion of 1:2:2 into the glass chamber. A tube carrying water vapor was also connected to the chamber. The lighting effect was mimicked by the action of electric discharge in the chamber. The process of the evaporation and precipitation was also simulated by the use of heating, mantle and condenser respectively. The mixture of CH4, NH3 and H2, CH4 methane, NH3 ammonia or H2 is a hydrogen, was exposed continuously to electric discharge for several days, causing the gases to interact, after which these were condensed. फिर ऑब्जर्वेशन करेंगे हम, तो ऑब्जर्वेशन में लिखेंगे इट वॉज ऑब्जर्व दैट द लिक्विड कलेक्टेड इन द यू ट्यूब टर्न्ड ब्राउन. थर्ड पॉइंट लिखेंगे रिजल्ट एंड कंक्लूजन. तो रिजल्ट और कंक्लूजन में लिखेंगे केमिकल एनालिसिस ऑफ द लिक्विड रिपोर्टेड द प्रेजेंस ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, यूरिया, अमोनिया एसिड, लैक्टिक एसिड एक्सेट्रा. दिस एक्सपेरिमेंट स्ट्रांगली सपोर्ट्स दैट द सिंपल molecules present in the earth early atmosphere combined to form the organic building block of lives. सो हमने यहाँ पे ये यूरी का एक्सपेरिमेंट देख लिया, ठीक है. फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज आइसोलेशन. डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेटॉन्स. आंसर लिखेंगे आइसोलेशन इज द सेपरेशन of the population of a particular species into smaller units which prevents interbreeding between them, a barrier that prevents gene follow or exchange of gene between isolated populations is called isolating mechanism. A number of isolating mechanisms are operated in nature and therefore divergence and speciation may occur. The isolating mechanisms are of two types, namely geographical isolation and reproductive isolation. First, geographical isolation. It is also called as physical isolation. It occurs when an original population is divided into two or more groups by
Geographical barriers such as rivers, oceans, mountains, glaciers, etc. These barriers prevent interbreeding between isolated groups. The separated groups are exposed to different kinds of environmental factors and they acquired new traits by mutation. The separated population develop distinct gene pool and they do not interbreed, thus new species have been formed by geographical isolation. Example, Darwin's finches. Reproductive isolations. Reproductive isolation occur due to change in genetic material, gene pool and structure of genital organs. It prevents interbreeding between population types of isolating mechanism. A. Pre-mating of pre-zygotic isolating mechanism. This mechanism prevents fertilization and zygote formation. Habitat isolation or ecological isolation. Members of a population living in the same geographic region but occupying separate habitat in such a way that potential may do not meet. Sensual or temporal isolation. Member of a population living in the same geographic region but are sexually mature at different years or different times of the year. Ecological isolation. Due to specific mating behavior, the member of the population do not meet. Mechanical isolation. Member of two population have a difference in the structure of reproductive organ. Second point, post mating or post zygotic barriers. First point लिखेंगे gametes mortality. Gametes have a limited lifespan due to one or the other reasons. If the union of two gametes does not occur in the given time, it results in gamete mortality. Zygote mortality. Here egg is fertilized but the zygote dies due to one or more other than reason. Hybrid sterility. Hybrids develop to maturity but becomes sterile due to the failure proper gametogenesis. Example, mule is an intergeneric hybrid that is sterile. Sixth question, what is genetic variation? Explain the different factors responsible for genetic variations. Genetic variation. They are caused due to the various aspects of mutation, recombination, and migration. The change in gene and gene frequency is known as genetic variation. Genetic variation are caused by the following factors. First, gene mutation. Sudden permanent heritable change is called a mutation. Mutation can occur in the gene, in the chromosome, and the chromosome number. The mutation that occurs within the single gene is called point mutation or gene mutation. Mutation lead to change in the phenotypic or organism causing variation. Second factor is genetic recombination. In sexually reproducing organisms, during gamete formation, the exchange of genetic material occurs between non-sister chromatid of homologous chromosome species called crossing over. It produces new genetic recombination that results in various fertilization between opposite mating gametes lead to various recombinations, resulting in the phenotypic variations, causing a gene in the frequencies of alleles. Third point is means third factor is gene follow. Gene flow. Gene flow is the movement of gene into or out of a population. Gene movement may be in the form of migration of organisms or gametes or segments of DNA. Gene flow also alters gene frequency, causing evolutionary changes. Fourth factor is genetic drift. Any random fluctuation in allele frequencies occurring in the natural population by pure chance is called genetic drift. Example, when the size of population is severely reduced due to the natural disasters like earthquakes, floods, fire, etc., it causes the elimination of particular alleles from a population. Smaller population have greater chances for genetic drift. It will result in a change in the gene frequency. Genetic drift is also an important factor for evolutionary change. Fifth factor is chromosomal
aberrations. The structural and morphological change in the chromosomes due to the rearrangement is called chromosomal aberrations. It change the arrangement of the gene that results in the variation. Chromosomal aberrations occur due to the following reasons. First, deletion, loss of gene from the chromosome. Duplication, gene are repeated or double in the number of on the chromosome. Inversion, a particular segment of the chromosome is broken and get reattached to the same chromosome in an inverted position due to 180-degree twist. There is no loss or gain of the gene complement of the chromosome. Fourth, translocation. Transpiration of a part of chromosome or a set of genes to a non-homologous chromosome is called translocation. It is affected naturally by the transponses present in the cell. सो यहाँ पे आपको दिखाया गया है डिलीटेशन क्या है, डुप्लीकेशन क्या है, इन्वर्जन क्या है और ट्रांसलोकेशन क्या है. सो ये एक बार देख लेना, एमसीक्यू में इससे क्वेश्चन आते हैं. ठीक, डिलीटेशन हुआ तो कौन सा कहाँ पर कट हुआ, क्या हो रहा है, या फिर कुछ भी पूछ सकते हैं. तो यहाँ पे 1 मार्क्स के लिए मेजोरिटी आता है, या तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोलेगा. ठीक है, सो यहाँ अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6. कंप्लीट द चार्ट. एरा और उसके बाद दिया है यहाँ पे डोमिनेटिंग ऑफ ग्रुप एनिमल. फर्स्ट है सीनोजोइक. तो सीनोजोइक में हम लोग लिखेंगे मैमल्स. यहाँ पर दूसरे में लिखेंगे मीजोजोइक, रेप्टाइल्स. थर्ड है पैलाजोइक, यहाँ पे लिखेंगे एम्फीबियंस. और फोर्थ है, यहाँ पे डैश दिया यानी ब्लैंक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पैलेजोइक, और यहाँ पे लिखा ही हुआ है इन्वर्टिब्रेट्स. सो यहाँ पे आपको जो कंप्लीट द फॉलोइंग दिया गया था चार्ट, तो यहाँ पे आंसर आपको नीचे दिखाया जा रहा है, आप लोग देख लीजिए. ठीक है, सो यहाँ पर हमारे चैप्टर 5 का जितना एक्सरसाइज था सारा सॉल्व किया है हमने. ठीक है, एक भी क्वेश्चन हमने एंड नहीं किया उसको. ठीक है, सो मोटिवेट होइए आप लोग, क्योंकि 12th का बोर्ड एग्ज़ाम होता है ना. सो आप लोग अच्छे से पढ़िए और कुछ नहीं. और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप जितना लाइक करोगे वीडियो की रीच उतनी बढ़ती है और वो उतने ही बच्चों तक पहुंचते हैं. ठीक है, तो हमारा एम है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचे. ओके, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय एंड टेक केयर. आपको कोई अलग टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा तो आप कमेंट में बोल दीजिएगा. ओके, चलिए बाय एंड टेक केयर. और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि हर जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलते जाए और आप अच्छे से पढ़ाई करते रहो. चलो बाय एंड टेक केयर.